Hi students, welcome to our session today. Sorry, we are starting a bit late. Apologies for that. So let us start right away. So we will be doing some passage-based critical reasoning today. So passage is already there on the Telegram channel. Here is your passage. Quickly have a look and then we will move on to the questions. Hi Gargi. Hi Ashi. Good evening, all of you. Welcome Vaishnavi and MS Khan. We do provide RSMs are there and class sheets are provided. If not able to read, it is also there on the Telegram channel. You can read from there. Read the passage. Should I move to the questions? Oh, is it in serve? Neeraj has read. What about others? For passage based Vaishnavi, it will help you understand the passages. Chali, here's the first question. Those who have not read can still read from the portal. And when you want to refer, you can. Yash, ask me at the end. I'll explain it to you.
Answer for first one. Well, first you try to do, and then we'll discuss the passage and then the answers. चलिए, second one. चलिए, second से third. We have five questions. Neelam, this is for your law entrance test, CLAT specifically. But yes, other exams where passages are asked, helpful for that as well. Sanjana, ask me at the end. I'll explain you. Chaliye, the fourth question, penultimate question. Sure, Neeraj. Chaliye, the last question, and then we'll discuss the passage and also what is the genre. Do tell me, in your opinion, what is the genre of this passage? General questions, keep it towards the end. Right now, we'll focus on these questions.
चलिए, let us check. I'll quickly explain the passage, but before that, what should be the approach to solve passages in CR? So, in short, if we talk about ideally in CR, because the questions are not direct, so you should first read the passage and then the questions. Because पहले अगर आप क्वेश्चन पढ़ लो तो फिर योर माइंड इज डाइवर्टेड कि आपको इतनी सारी चीजें ध्यान रखना है. डायरेक्ट क्वेश्चंस में इट में हेल्प यू, बट इनडायरेक्ट क्वेश्चंस में इट्स बेटर कि आप पहले पैसेज पढ़ लो. एंड दोज हु फाइंड इट डिफिकल्ट टू रिटेन द पैसेज आफ्टरवर्ड्स, लगता है कि इसको एक बार में समझ में नहीं आया या दोबारा पढ़ने की जरूरत हो, तो नहीं, दैट इज नॉट द स्टैंडर्ड स्ट्रेटेजी कि आप बार बार पढ़ो. बल्कि फिर क्या होना चाहिए आपका कि यू ब्रेक इट इनटू पार्ट्स और जस्ट डू अ recap ऑफ ईच पार्ट before moving on to the next part. तो इस तरह से फिर you will be able to understand the main point as well as the key ideas. तो चलिए, क्या बात कर रहा है यहाँ पे कि नंबर्स जो है उनसे आप दे कैन बी हसल्ड, दे कैन बी यूज्ड टू टेल मैनी टेल्स, तो आप पुश कर सकते हो उसको. लेकिन यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं अबाउट दिस. लेंसेट ने जो हमें बताया है कि कितनी डेथ्स हुई हैं बिकॉज ऑफ कोविड की वजह से जो ऑर्फन्स हुए हैं. सो उसके अंदर उसने इंडिया के लिए भी बताया कि इंडिया में इतने हुए हैं, विच हैज रेज्ड इंडियाज हैकल्स. हैकल वैसे हो जाता है वो बाल जो खड़े हो जाते हैं डर के मारे. सो रेज्ड इंडियाज हैकल्स, इंडिया इज एंग्री एट दिस पार्ट के इतना यहाँ पे नंबर दिया गया है. लैंडसेट ने यहाँ पे बताया है कि ग्लोबली कितने हैं, इंडिया के अंदर कितने हैं, वो सब बताया है. व्हाट इज ऑर्फनहुड अकॉर्डिंग टू लैंडसेट, वो यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है. फिर यहाँ पे वो बता रहे हैं कि हालांकि ये इन्होंने रिवाइज्ड एस्टिमेट्स दिए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे ये भी पता चल रहा है कि देयर इज एन एब्सोल्यूट अर्जेंसी. अर्जेंटली गवर्नमेंट्स को देखना चाहिए यहाँ पे कि कैसे वो चाइल्ड केयर को भी यहाँ पे शामिल कर लें कोविड 19 मैनेजमेंट प्रोग्राम्स के अंदर. उनको एक्टिवली यहाँ पे ऐसे बच्चों को इनको लेकर आना चाहिए अपने प्रोग्राम्स के अंदर, वरना क्या रिजल्ट्स हो सकते हैं वो सब बताएं. पावर्टी, लैक ऑफ एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ केयर एक्सेट्रा. इंडियन गवर्नमेंट जो है उसने कुछ अनाउंस किए हुए हैं प्लान्स यहाँ पे, सपोर्ट फॉर चिल्ड्रन जो ऑर्फन हो गए बिकॉज ऑफ कोविड 19. कई सारे स्टेट्स ने अनाउंस किया है रिहैबिलिटेशन प्लान, जिसके अंदर शामिल है एडॉप्शन, फॉस्टर केयर, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, ये सब शामिल है. सम एडमिटेडली मोर प्रोग्रेसिव देन अदर्स, कुछ स्टेट्स आगे हैं दूसरे स्टेट से, लेकिन मोमेंटम वाज सर्टेनली बिल्ट अप इन द कंट्री. तो यहाँ पे इसके अंदर काम चल रहा है. अब इसको अपडेट करने की जरूरत है कि ऐसे प्रोग्राम्स को और आप अपडेट कर दो, और जो इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर भी आप देखो कि कहाँ पे वो पेंडिंग है, मतलब जो भी आपके पास कमियां हैं वो यहाँ पे पूरी कर लो, और वो आप पब्लिक रियल्म के अंदर, पब्लिक डोमेन के अंदर डालो. और स्टेट्स जो उन्होंने वेल डन, वेल बिगन इज हाफ डन, तो शुरुआत तो अच्छी करी है, लेकिन यहाँ पे इसको एक्सपैंड करना चाहिए, बढ़ा देना चाहिए. सो ओवरऑल वी आर टॉकिंग अबाउट दीज कोविड डेथ्स की वजह से जो ऑर्फन्स हो गए उन बच्चों को लेके यहाँ पे उनकी स्कीम्स चल रही हैं, अच्छी बात है, लेकिन अब उनको और बढ़ाना चाहिए. दैट इज व्हाट द राइटर इज सेइंग. यस अली, अ बिट लेट. तो व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पैसेज? किसी को चेंज करना है अभी अपना आंसर? फर्स्ट बोल रहा है इट इज टाइम टू फोकस ऑन अदर इश्यूज अराइजिंग आउट ऑफ कोविड. यहाँ पे एक ही मेन फोकस है अबाउट दोज ऑर्फन्स. तो फर्स्ट वाला तो इज सर्टेनली रॉन्ग. बी बी और सी में क्लोज ऑप्शन है. डी तो इजी टू एलिमिनेट. कोविड हैज एग्रेवेटेड मैनी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स, यहाँ पे एक ही प्रॉब्लम पे फोकस है, सो दैट इज आउट. शुड इट बी बी और सी? उसके अंदर बी इज राइट, सी इज रॉन्ग. सी बोल रहा है इंडिया मस्ट परस्यू स्कीम्स फॉर रिहेबिलिटेशन. स्कीम्स तो पहले ही है हमारे पास, तो उसका फोकस इस बात पे नहीं है. उसका फोकस किस बात पे? वी शुड अर्जेंटली फोकस ऑन द इश्यू रिलेटिंग टू ऑर्फनेज बाय टेकिंग अ होलिस्टिक व्यू. क्या उसकी वजह से हमारे साथ प्रॉब्लम आ रही है, होलिस्टिक ओवरऑल व्यू. तो कहाँ कमियां है वो आप पूरी कर लो, क्या उसके साथ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, दीज चिल्ड्रन व्हाट प्रॉब्लम दे में फेस, उसके ऊपर आप ध्यान रखो. और जो सेकंड पैराग्राफ के अंदर उसने कहा था अर्जेंसी है, सीक्स टू कन्वेज द एब्सोल्यूट अर्जेंसी. तो इसलिए यहाँ पे B will be a better choice than C. So correct answer will be B. चलिए सेकंड देखिए. Do mention the question number that you are answering. The author is most likely to agree with which of the following action by the government. किससे वो agree करेगा हमारे पास? क्रिएट न्यू प्रोग्राम्स, जो अभी प्रोग्राम्स है, ही इज सेइंग वेल बिगन इज हाफ डन, तो उससे तो वो सेटिस्फाइड है, तो न्यू के लिए वो नहीं मानेगा. सो ए
is wrong. बी बोल रहा है कंडक्ट अ स्टडी ऑन द एस्टिमेटेड नंबर ऑफ ऑर्फन्स एज अ रिजल्ट ऑफ कोविड. अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अनहैप्पी विद दिस लैंडसेट नंबर्स, लेकिन फोकस यहाँ पे उसका ये नहीं है, बल्कि फोकस उसका क्या है, नंबर्स के बजाय कि यू प्रोवाइड रिलीफ टू दीज ऑर्फन चिल्ड्रन. सो इसलिए बी इज आउट. सी बोल रहा है द गवर्नमेंट शुड सब्सटेंशिएट इट्स स्टैंड अबाउट द नंबर्स. अगेन नॉट द फोकस के नंबर सही पता चलना चाहिए, बल्कि डी, the government should move ahead and expand the already existing efforts regarding orphanage. जो लास्ट के दो तीन लाइंस में उसने बात करी है. So D is going to be the correct answer here. चलिए थर्ड क्वेश्चन. Wanna change this? While the study does include revised estimates for all the nations, the message क्या है इसका यहाँ पे? It seeks to convey is the absolute urgency with which governments must incorporate child care into any COVID-19 management programs. Which of these statements, if true, strengthens the statement कि जो भी आपके पास COVID-19 मैनेजमेंट प्रोग्राम चल रहा है उसके अंदर आपको चाइल्ड केयर भी इन्वॉल्व करना चाहिए, इसको हमें स्ट्रेंथन करना है. Shrish, we are now on third, so I'll explain it to you at the end if you are still confused. फर्स्ट हमसे यहाँ पे बोल रहा है कोविड मैनेजमेंट प्रोग्राम्स विल फेल इफ वी इंक्लूड अदर प्रोग्राम्स आल्सो अंडर इट्स एम्बिट. तो ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया कि प्रोग्राम ही फेल हो जाएगा अगर दूसरे प्रोग्राम्स लेकर रखें तो. बी ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा है, इसलिए दैट इज आउट. सी बोल रहा है कोविड मैनेजमेंट कैन नॉट बी डन इफेक्टिवली विदाउट टेकिंग चाइल्ड केयर इनटू कंसिडरेशन. नाउ if this is true that you cannot have COVID management effective without childcare, then this is certainly strengthening this point that you should include childcare in COVID management programs. So C should be the correct answer. Let us check D also. COVID programs should be implemented as early as possible. COVID programs की बात नहीं हो रही है, COVID programs में child care के बारे में बात हो रही है. So D is also not strengthening. Only C is strengthening. चलिए फोर्थ क्या होना चाहिए यहां पे आंसर. द ऑथर इज मोस्ट लाइकली टू एग्री विद विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स, किसके साथ वो एग्री करेगा. द रिसेंट स्टडी अबाउट नंबर ऑफ ऑर्फन गिव्स द एक्चुअल नंबर्स. एक्चुअल नंबर्स नहीं है यहां पे, उसने एस्टिमेट दिया हुआ है, तो फर्स्ट तो इज आउट. बी द लैंसेट स्टडी इंटेंड्स टू क्रिएट पैनिक. इट वांट्स टू क्रिएट पैनिक नहीं, वांट्स टू टेल गवर्नमेंट्स कि यहाँ पे ध्यान दिया जाए इस पे. See, the Lancet study are estimates, but we should consider its message urgently. Yes, राइटर यही बात बोल रहा है सेकंड पैराग्राफ के फर्स्ट सेंटेंस में कि अर्जेंसी जो है उस पर ध्यान देना चाहिए. तो C could be the answer. D, the Lancet study is controversial and therefore cannot be relied upon. Contradictory to the passage, राइटर इसी को सपोर्ट कर रहा है, इसलिए C will be the correct answer. D is contradictory. अली डी इज कॉन्ट्राडिक्टरी के इट शुड नॉट बी रिलाइड अपॉन. राइटर तो बोल रहा है कि इसको आप मैसेज समझो इसका जो वो बोल रहा है. दैट इज वाई डी रॉन्ग, सी करेक्ट. चलिए लास्ट क्वेश्चन. Sure, Yash. Remind me at the end. I'll be taking some general questions towards the end. Which of the following can be inferred from the above passage? The Lancet study can be used to derive various interpretations. ये तो सही है, can be used to derive. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको बोला है कि दिस इज रॉन्ग क्योंकि इट हैज बिकम एंग्री ऑन दीज नंबर्स. उनका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नॉट सीम्स थिंग्स दैट दिस इज इनकरेक्ट नंबर, जबकि लैंसेट ने अपना एस्टिमेट दिया हुआ है. सो इट इज हैविंग वेरियस इंटरप्रिटेशंस. तो फर्स्ट इज करेक्ट. सेकेंड बोल रहा है गवर्नमेंट्स लैक अ प्रोग्राम टू सपोर्ट चिल्ड्रन ऑर्फन ड्यू टू कोविड. रॉन्ग, यहाँ पे दिया हुआ है अलग अलग स्टेट्स के अंदर उन्होंने क्या क्या रखा है, सेकंड पैराग्राफ लास्ट पार्ट में दिया हुआ है डिस्कशन में. सो दिस इज कॉन्ट्राडिक्टरी. बी इज रॉन्ग, तो फिर डी तो रॉन्ग हो ही जाएगा. ऑल ऑफ दीज. सी, वी नीड अ प्रोग्राम टू सपोर्ट पुअर किड्स हु कैन नॉट अफोर्ड द बेसिक फैसिलिटीज. पुअर किड्स आर नॉट द फोकस. किड्स हु आर ऑर्फन्ड बाय द कोविड, वो दे आर द फोकस. पुअर किड्स इन जनरल, तो दोज हु आर लिविंग विद देयर पेरेंट्स बट आर वेरी पुअर, वो फोकस नहीं है. तो सी इज ऑल्सो आउट, मतलब ए
इज द करेक्ट आंसर हियर। चलिए, तो कितना स्कोर रहा यहाँ पे? द अर्लियर यू स्टार्ट द बेटर, अमनप्रीत एंड अदर्स। जहां जिन्होंने पहले कर दिया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि द बोट हैज सेल्ड, अब कुछ नहीं किया जा सकता है। यू स्टिल हैव टाइम, गिव आउट योर, गिव ऑल आउट योर एफर्ट्स, यू विल सर्टनली एक्सेल। चलिए, a single paragraph question before moving on to the second passage. Wow, a lot of you got full marks or just one incorrect. ठीक है, जिनके कम भी आए तो कोई बात नहीं, बिकॉज हो जाता है कभी कभी। प्लस यहाँ पे आप प्रैक्टिस करोगे तो यू विल इम्प्रूव सर्टनली। चलिए, क्या बात हो रही है यहाँ पे कि लॉ कॉलेज के अंदर यहाँ पे मैथ रेमेडियल कोर्स ऑफर किया गया है उन स्टूडेंट्स के लिए जो नॉन मैथ बैकग्राउंड से आते हैं, जैसे कि फ्रॉम कॉमर्स, फ्रॉम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, साइकोलॉजी, बायोलॉजी, एक्सेट्रा। तो अब क्रिटिक्स का यहाँ पे क्या कहना है कि स्टडी से ये पता चला है कि भले ही हमने यहाँ पे मैथ रेमेडियल कोर्स रखा हुआ हो, फिर भी यहाँ पे क्या हुआ है, परफॉर्मेंस इन स्टूडेंट्स की देखी जाए तो यहाँ पे उन स्टूडेंट्स से जिनके पास था मैथ्स, उनसे पीछे ही रहे हैं वो। तो वो क्या बोल रहा है यहाँ पे, रेमेडियल कोर्सेज फॉर मैथ शुड बी डन अवे विथ, खत्म कर देना चाहिए, एज दे सर्व नो पर्पस। क्योंकि रेमेडियल कोर्स किया उन्होंने, उसके बाद भी वो मैथ्स वालों से पीछे ही रहे, तो इसलिए खत्म ही कर देना चाहिए। वी हैव टू लुक द स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर आर्ग्यूमेंट। स्ट्रॉन्गेस्ट काउंटर आर्ग्यूमेंट मतलब वो वाला पॉइंट विच टेल्स अस कि कंटिन्यू करना चाहिए हमें मैथ्स प्रोग्राम्स। फिफ्थ बोल रहा है, स्टडी विच शोज दैट द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन एरियाज लाइक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट दैट डू नॉट रिक्वायर अ मैथमेटिकल एप्टीट्यूड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन देयर एकेडमिक बैकग्राउंड। एकेडमिक बैकग्राउंड पे डिपेंड ही नहीं करेगा इन एरियाज के अंदर। बट अगर इन एरियाज में मैथ्स पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है तो फिर तो ठीक है, आप मैथ्स हटा दो। यहाँ पे हमें देखना है वो पॉइंट कि मैथ्स चलने दो आप, तो इसलिए फिफ्थ इज आउट। फोर्थ बोल रहा है कि इंटरनेशनल या कॉर्पोरेट लॉ में जब जाते हैं लोग तो दे रिक्वायर अ सिग्निफिकेंट मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, दे रिक्वायर इट। तो यहाँ पे मैथ्स की इंपॉर्टेंस पता चल रही है, बट यहाँ पे नॉन मैथ्स स्टूडेंट के लिए वो कंटिन्यू आप रख रहे हो, रेमेडियल कोर्स उसके ऊपर वो बात नहीं कर रहा है, इसलिए दिस इज न्यूट्रल। दिस जस्ट टेल्स अस कि मैथ्स इज इंपॉर्टेंट। थर्ड बोल रहा है, study which shows that law school graduates do not need a significant mathematical aptitude in order to perform well in their professional lives। प्रोफेशनल लाइफ की बात हो रही है, जबकि हम बात कर रहे हैं कि when they are studying, when they are still in a law school। So third is not telling you that। बी बोल रहा है कि स्टडी से देखा गया है मैथ्स टेस्ट पहले जो थे उनके परफॉर्मेंस और बाद में इन नॉन मैथ स्टूडेंट्स के, तो पहले के कंपैरिजन में बाद में इंप्रूव हुए हैं स्कोर। तो भले ही यहाँ पे बी इज स्ट्रेंथनिंग दिस पॉइंट कि मैथ्स को कंटिन्यू किया जाए, इस मैथ रेमेडियल कोर्स को, क्योंकि यहाँ पे भले ही वो मैथ वाले स्टूडेंट से पीछे हैं, लेकिन पहले के कंपैरिजन में उनकी अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव हुई है। तो ये कह देना कि दे सर्व नो पर्पस, दे डू सर्व द पर्पस। नॉन मैथ बैकग्राउंड स्टूडेंट्स के यहाँ पे इंप्रूव हो जाते हैं मार्क्स।
तो इसलिए बी शुड बी द करेक्ट आंसर। लेकिन एक बार ए भी देख लेते हैं। 80% ऑफ लॉ स्टूडेंट्स हैव मैथमेटिक्स बैकग्राउंड, मतलब 20% का क्या है, उनके लिए आप चला सकते हो या नहीं, दैट इज नॉट टेलिंग यू दैट। सो बी इज द करेक्ट आंसर। कुमकुम समझ में नहीं आया। कुमकुम बेटा, यहाँ पे बात हो रही है कि मैथ, नॉन मैथ स्टूडेंट्स के लिए आपको रेमेडियल कोर्स मतलब इम्प्रूव करने के लिए एक स्पेशल क्लास मैथ्स की चलाई जाए। उसकी इंपॉर्टेंस हमें देखनी है। वो इंपॉर्टेंस आ रही है सेकंड में, जिसमें पता चल रहा है कि पहले और आपके कंपैरिजन में उनके मार्क्स इंप्रूव हुए हैं नॉन मैथ वाले स्टूडेंट्स के। इंप्रूव हुए कोर्स करने के बाद दैट मीन्स दे शुड कंटिन्यू विद दैट। चलिए नेक्स्ट पैसेज। अगेन देयर ऑन द टेलीग्राम चैनल, वहां से आप पढ़ लेना। Alash, is this UPSC level? This is beta your level only. जो अभी मैंने बात करी नॉन मैथ रेमेडियल क्लासेस। काउंटर आर्ग्यूमेंट कुमकुम ऑपोजिट। मॉक्स में तो पलाश वी कीप इट ऑफ डिफिकल्टी लेवल कीप्स चेंजिंग। Ali has read others. Should I move to the questions? चलिए डन। सो here are your questions. Question first. Oh sir, I've moved on. You read it from there. Telegram. अमन, this is less than 500 words passage, जबकि आपके पास CLAT
last year के अंदर you had one passage which was about 609 words. It is within the limits of CLAT. Abhishek, let others also answer it. Oh, Shreya. चलिए, second. चलिए, done. Third question. चलिए, fourth question. To mention the question number you are answering.
चलिए द लास्ट क्वेश्चन हियर। चलिए लेट अस चेक। क्या बात हो रही है यहाँ पे, माइग्रेशन को लेके बात हो रही है कि जो इमिग्रेंट्स होते हैं वो अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड से आते हैं और उनकी अपनी कल्चरल आइडेंटिटीज होती हैं। अब ये जो कल्चरल आइडेंटिटी होती है, यहाँ पे कई सारे फैक्टर्स रहते हैं उसके पहले और बाद जो माइग्रेशन प्रोसेस हुआ है। और यहाँ पे कल्चरल बेरीफमेंट हो सकता है। व्हाट इज बेरीफमेंट? दैट सैडनेस व्हेन यू लूज समवन। जैसे किसी के पेरेंट्स की डेथ हो गई तो ही विल बी bereaved। तो यहाँ पे कल्चरल बेरीफमेंट हो जाता है, एक पोटेंशियल इनहेरेंट कॉन्सिक्वेंस रहता है, रिजल्ट रहता है उन लोगों में जिन्होंने माइग्रेशन किया है। कल्चरल आइडेंटिटीज इन लोगों की इंटरैक्ट किसके साथ करती हैं? उनके साथ भी, मेजोरिटी कल्चर जो है उनके साथ भी, प्लस वहां पे दूसरे इमिग्रेंट्स भी आए दूसरी जगहों के, तो उनके साथ भी। सिमिलर एंड डिस्पैरेट, डिस्पैरेट मतलब अलग अलग कल्चर से। तो यहां पे या तो सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड कंफर्ट आ सकता है, या फिर सेंस ऑफ एलियनेशन, अलग थलग होने वाली फीलिंग भी आ सकती है कि सबसे अलग हो गए। एंड डिस्ट्रेस भी यहाँ पे हो सकता है। अब यहाँ पे जो पोस्ट माइग्रेशन फेज होता है, यहाँ पे पर्सनल फैक्टर्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट रहते हैं यहाँ पे, कि कितना आप कोप कर सकते हो इस एडवर्सिटी, इस डिफिकल्ट सिचुएशन से, जिसमें पर्सनल फैक्टर्स जैसे कल्चरल आइडेंटिटी क्या है, सोशल सपोर्ट नेटवर्क्स क्या है, सेल्फ एस्टीम आपकी कितनी है, फिर अचीवमेंट, रेसिज्म, एथनिक डेंसिटी, ये सारे फैक्टर्स हैं विच आर रिलेशनल फैक्टर्स यहाँ पे इमिग्रेंट्स के लिए। तो फर्स्ट पैराग्राफ में वी आर टॉकिंग अबाउट दीज इमिग्रेंट्स, और यहाँ पे कि जब वो उनका कल्चरल जो इफेक्ट आ रहा है उसके ऊपर यहाँ पे बात हो रही है। सेकंड पैराग्राफ में बात कर रहे हैं कि एथनिक डेंसिटी मतलब उनकी रेस के कितने लोग हैं वहां पे, साइज क्या है उसका टोटल पॉपुलेशन के कंपैरिजन में, ये भी एक फैक्टर हो जाता है जो इन्फ्लुएंस करता है वहां पे मेंटल इलनेस इन एथनिक माइनॉरिटीज। यहाँ पे अलग थलग होने वाली फीलिंग, एलियनेशन की फीलिंग आ सकती है अगर कल्चर और सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स वहां पे उस इंडिविजुअल के अलग हों जो सराउंडिंग पॉपुलेशन से, जहां पहुंचे हैं वहां का अलग से पूरा कल्चर है और ये जहां से कल्चर से आया है इमिग्रेंट उसका अलग होता है। तब यहाँ पे एथनिक डेंसिटी अगर ज्यादा होती है तो यहाँ पे सोशल सपोर्ट और एडजस्टमेंट ज्यादा अच्छा हो जाता है। फिर भी डिस्ट्रेस भी हो सकता है, स्पेशली अगर यहाँ पे कुछ कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट उसको देखने को मिले बिटवीन द इंडिविजुअल एंड हिज कल्चर ऑफ ओरिजिन, जिस कल्चर से वो आया है वहां से। मल्टीपल स्टडीज में यह देखा गया है कि मेंटल डिसऑर्डर्स जो है वो आमतौर पे देखे जाते हैं ऐसे लोगों में जो कि एथनिक माइनॉरिटी ग्रुप से उस एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे उनके ग्रुप के लोग कम हो। तो रिस्क फैक्टर्स यहाँ पे कॉमन मेंटल डिसऑर्डर्स के एथनिक माइनॉरिटी ग्रुप्स में क्या हो जाते हैं, फिर पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, रेसिज्म, ये सारे आपको देखने को मिलेंगे इसकी वजह से। लास्ट पैराग्राफ के अंदर बात हो रही है कि यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जो नेचर है उस सोसाइटी का जहां से इंडिविजुअल आया है और कहाँ वो गया है, सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उस इंडिविजुअल के जहां से वो माइग्रेट हुआ है, और कितना ज्यादा वो एडजस्ट हो रहा है इस माइग्रेशन प्रोसेस में। वो इंडिविजुअल्स जो ऐसी जगह से आते हैं जो सोशियो सेंट्रिक या कलेक्टिविस्ट हो, जहाँ पे मिलजुल के रहने की ज्यादा चलता हो, तो वो सोसाइटीज ऐसी अगर चले गए जहां पे ईगोसेंट्रिक या इंडिविजुअलिस्टिक हो, जिसमें आपस में इतना ज्यादा मेलजोल नहीं हो, एक दूसरे से लोग इतने ज्यादा मिलते जुलते नहीं हो, तो हो सकता है कि उन्हें वहां पे प्रॉब्लम आ जाए, स्पेशली अगर ये इंडिविजुअल जो है वो भी प्रीडोमिनेंटली, वो भी इंडिविजुअल जो है वो सोशियो सेंट्रिक हो इन देयर ओन बिलीफ सिस्टम, आया भी ऐसे कल्चर से जो सोशियो सेंट्रिक है और वो खुद भी सोशियो सेंट्रिक है, तो उसे ज्यादा प्रॉब्लम आएगी।
यहाँ पे एडिक्वेट सोशल सपोर्ट सिस्टम का ना होना, अलग अलग एक्सपेक्टेशंस जो आपकी हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं, सेल्फ एस्टीम आपकी कम है, तो ये सब चीजें हो सकती हैं अगर दोनों कल्चर्स में डिफरेंस आए। एथनिक डेंसिटी यहाँ पे अगर बढ़ रही है तो इससे जो डिस्ट्रेस है, जो डिसअपॉइंटमेंट है, वो इंडिविजुअल का इसमें कम हो सकता है क्योंकि सोशल सपोर्ट सिस्टम मिल जाता है। कल्चरल बेरीवमेंट जो है, जो ऊपर हम देख चुके हैं, ये भी आपका यहाँ पे कम हो सकता है अगर इमिग्रेंट जो है वो अपने ओरिजिनल कल्चर के साथ मेंटेन कर पा रहे हैं अपनी टाइज को किसी भी तरह, इंक्रीज एथनिक डेंसिटी से या सोशल सपोर्ट या मेंटेनेंस ऑफ रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिस। दूसरी तरफ इंडिविजुअल्स जो ऐसे आए, जो आए तो हैं सोशियो सेंट्रिक कल्चर से, ऐसी सोसाइटी के अंदर जो ईगो सेंट्रिक हो, लेकिन उनके अंदर कम रहेगी अगर वो पर्सन जो आया वो खुद भी ईगो सेंट्रिक या इंडिविजुअलिस्टिक हो। ईगो सेंट्रिक सेल्फ सेंटर्ड, दूसरों से ज्यादा मतलब नहीं रखना। तो आया तो है वो ऐसे सोसाइटी से जहां पे कि इट इज नॉट ईगो सेंट्रिक, लेकिन दिस पर्सन, उसका नेचर है ईगो सेंट्रिक, गया भी ऐसे ही कल्चर में, तो फिर उसको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, सो ओवरऑल वी आर टॉकिंग अबाउट दिस इफेक्ट ऑफ कल्चर ऑन अ माइग्रेंट। चलिए, तो लेट अस लुक एट द क्वेश्चंस। तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पैराग्राफ, cultural bereavement is, what is cultural bereavement according to the first paragraph जो हम देख चुके हैं यहाँ पे? Cultural bereavement is a potential inherent consequence in people who have migrated, जो अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह गए हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका क्या आंसर होना चाहिए? अगेन, द एक्सपीरियंस ऑफ अ पर्सन एक्सपोज टू एन अनफेमिलियर कल्चर। ये एक्सपोजर तो आपका तब भी हो सकता है जब आप अपनी ही जगह पे हो। मान लो आपके लोकेलिटी के अंदर 3 फैमिलीज आ गई हैं ऑस्ट्रेलिया से, कोई इंटरनेशनल स्कूल है, वहां पढ़ाने के लिए ऑस्ट्रेलिया से 3 फैमिलीज आई हैं, तो वहां पे भी आपको एक एक्सपोजर हो जाएगा अनफेमिलियर कल्चर से, भले ही आपने माइग्रेशन नहीं किया हो, है ना। जबकि हम यहाँ पे कल्चरल बेरीवमेंट के लिए क्या देख रहे हैं? हु हैज माइग्रेटेड, तो इसलिए फर्स्ट वन विल बी रॉन्ग। सेकंड बोल रहा है एक्सपीरियंस ऑफ एन अपरूटेड पर्सन, अपरूटेड पर्सन मतलब पर्सन हु हैज माइग्रेटेड, वही होगा, हु हैज डन बीन अपरूटेड, तो बी हो सकता है। सीओडी भी लेकिन देख लें, सीआर के अंदर वी शुड ऑलवेज लुक ऑल द ऑप्शंस। सी बोल रहा है इनएबिलिटी टू एडजस्ट टू अ फॉरेन कल्चर, वे ऑफ लाइफ और एटीट्यूड, लेकिन यहाँ पे वो माइग्रेशन उसने किया हुआ है, वो वाला फैक्टर नहीं आ रहा है। डी, अ सेंस ऑफ एलियनेशन एंड डिस्ट्रेस, सेंस ऑफ एलियनेशन एंड डिस्ट्रेस तो आपको अपनी सोसाइटी में भी हो सकता है। यू आर लिविंग इन दैट पर्टिकुलर सोसाइटी विच इज सोशियो सेंट्रिक बट आप ईगो सेंट्रिक हो, या आप सोशियो सेंट्रिक हो बट आपकी सोसाइटी इज सेल्फ सेंटर्ड। आप चाहते हो लोगों से मिलना जुलना बट सोसाइटी इज सेल्फ सेंटर्ड, तो वहां पे भी यू मे हैव दिस सेंस ऑफ एलियनेशन। सो नॉट रिलेटेड टू माइग्रेशन, मतलब बी इज गोइंग टू बी द करेक्ट आंसर। चलिए, चेक आउट द सेकंड वन। सेकंड में क्या होगा आंसर? क्विकली, the author refers to adversity in the first paragraph. All of the following are examples of adversity faced by a migrant except, माइग्रेंट को यहाँ पे कौन सी, यहाँ पे एडवर्सिटीज, मुश्किल सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है, एक्सेप्ट। जो एडवर्सिटी यहाँ पे फर्स्ट में उसने बात करी है। अब द डिफरेंस बिटवीन एन इंडिविजुअल एंड द सराउंडिंग पॉपुलेशन, ये सब दिए हुए हैं, ओनली बी इज टॉकिंग अबाउट, हमें एक्सेप्ट क्वेश्चन है, द इंडिविजुअल्स प्री एग्जिस्टिंग कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट विद द कल्चर ऑफ हिज ओरिजिन, कल्चर ऑफ हिज ओरिजिन, और ये प्री एग्जिस्टिंग कल्चरल है, तो यहाँ पे इट इज नॉट द इम्पैक्ट ऑफ द माइग्रेशन, ये तो पहले से ही था ना, इट वॉज प्री एग्जिस्टिंग कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट, तो नथिंग टू डू विद हिज माइग्रेशन, तो मतलब बी इज करेक्ट, क्योंकि ए सी डी दे आर रिलेटेड टू योर माइग्रेशन, बट बी में आपके पास प्री एग्जिस्टिंग है, तो इसलिए बी विल बी द करेक्ट आंसर हियर। चलिए, थर्ड, according to the passage all of the following contribute to mental illness among migrants except, again this is an except question कि कौन सा इसमें mental illness cause नहीं करेगा, तो लो डेंसिटी ऑफ one's own ethnic group, racial prejudices, poverty and unemployment, yes they do contribute। अगर आप देख लो तो ethnic density, the size of a particular ethnic group in proportion to the total population in a specified area, may be a factor that influences the rates of mental illness।
तो यहां से हमारे पास ये तीनों के तीनों आ गए। तो ए बी सी रॉन्ग, डी विल बी करेक्ट, माइग्रेटिंग फ्रॉम इगोसेंट्रिक और इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटीज। यहां पे भले ही आप आए हो, इंडिविजुअल्स हु माइग्रेट फ्रॉम अ प्रीडोमिनेंटली सोशियोसेंट्रिक कल्चर इनटू अ सोसाइटी दैट इज प्रीडोमिनेंटली इगोसेंट्रिक, को कम आएगी परेशानी, may experience little in the way of problems and a relatively easy transition to the new culture if the person who has migrated is mostly egocentric or individualistic। वो खुद भी इंडिविजुअलिस्टिक हो, भले ही वो आया वहां से हो, तो उसे कम परेशानी आएगी। सो दैट मीन्स डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए फोर्थ का आंसर क्विकली, व्हाट शुड बी देयर फॉर फोर्थ? According to the passage, how well a person will adjust during the migration process depends on all of the following again except, किसके ऊपर वो डिपेंड नहीं करता है? फर्स्ट बोल रहा है इंटरैक्शन विद डाइवर्स कल्चरल आइडेंटिटीज, इंटरैक्शन विद डाइवर्स कल्चरल आइडेंटिटीज की वजह से तो कल्चरल ब्रीवमेंट हुआ है उसको, जो फर्स्ट में दिया हुआ है। कल्चरल ब्रीवमेंट कहाँ हुआ है? ऐसे लोगों के साथ इंटरैक्शन होता है उसका जो जो कि मेजोरिटी कल्चर भी है, प्लस दूसरी जगहों से भी जो लोग आए हैं जिनके अलग अलग कल्चर हैं। तो कुड बी ए ऑप्शन, क्योंकि ए से तो आपके पास कल्चरल ब्रीवमेंट हो रहा है, जबकि कल्चर टू एंड फ्रॉम विच द पर्सन इज माइग्रेटिंग, और ये सी और डी ये तीनों आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। It is important to consider the nature of the society an individual has migrated from and the social characteristics of the individual who has migrated in determining how well a person will adjust during the migration process. So B, C, D given. DV, the ties that the person maintains with the culture of origin, that is also given here. Maintained with the ties of culture, so this can also be done either through increased ethnic density, ये सब भी दिया हुआ है आपके पास, इससे आपको हेल्प मिलती है कि how well he will adjust। तो only A is not the reason that how well he will adjust, कि कितना ज्यादा डाइवर्स कल्चरल आइडेंटिटीज हैं, वो तो bereavement हुआ उसको। सो इसलिए A will be the correct answer here। चलिए द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पैसेज एंड ऑल्सो फॉर टुडेज सेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस बेस्ट कैप्चर्स द फ्लो ऑफ द आइडियाज इन द पैसेज। सबसे पहले उसने हमको बताया था यहाँ पे माइग्रेशन के बारे में, फिर उसने हमें बता दिया कल्चरल ब्रीवमेंट के बारे में, फिर उसने बताया कि यहाँ पे क्या मेंटल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जिसमें एक रीजन रहता है कि आपकी एथनिक डेंसिटी कम है या एथनिक डेंसिटी ज्यादा है उस एरिया के अंदर, एंड फाइनली उसका साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। सो सी विल बी द बेस्ट चॉइस हेयर। इसी के अंदर बात हो रही है माइग्रेशन, कल्चरल बेरीवमेंट, मेंटल डिसऑर्डर, एथनिक डेंसिटी एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर्स। चलिए तो विद दिस आई विल बी एंडिंग द लेक्चर। अब किसी के जनरल डाउट्स हो तो आई एम हियर अनदर मिनट, जिनके नहीं है तो those who have not subscribed please do like and subscribe this, and if you don't have a doubt you can sign out। thank you very much। कितना स्कोर रहा टोटल आउट ऑफ 11? 6, 8, 3। यश, कंक्लूजन कैसे फाइंड करें? कंक्लूजन के लिए यश ये देखा करो कि वेयर द पैसेज इज लीडिंग यू टू। टिपिकली जहां पे क्या आप देयर फोर पुट कर सकते हो कि देयर फोर दिस, तो वो टिपिकली आपके पास हो जाता है कंक्लूजन। इसको आप यश उससे क्वेश्चंस के साथ करो, पर्टिकुलर स्पेशली पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस थोड़े से कर लो कंक्लूजन बेस्ड, तो वो और स्ट्रांग हो जाएगा आपका। कुमकुम, काउंटर आर्ग्यूमेंट हो जाता है, कोई आर्ग्यूमेंट आपको दिया हुआ है उसका ऑपोजिट, जैसे मैं आपसे बोलूं कि नेक्स्ट जनरल इलेक्शंस के अंदर या नेक्स्ट स्टेट इलेक्शंस में वहां हो रहे हैं, वहां पे पॉलिटिकल पार्टी एक्स विल विन, आप काउंटर आर्ग्यूमेंट दे रहे हो तो मतलब आप बोल रहे हो कि एक्स की हार होगी, एक्स की जीत नहीं होगी। पहली अगर हम बात कर लें आइडियल टाइम टू गिव टू दिस सेक्शन, तो ये होता है अगर आप क्लैट की क्लैट मॉक क्लैट एग्जाम की बात कर रहे हो तो 25 to 30 मिनट्स।
और मार्क्स ओवरऑल अली आपके इंप्रूव होते रहना चाहिए. देयर शुड बी एन इम्प्रूवमेंट इन द रादर परसेंटाइल आई विल से, नॉट जस्ट मार्क्स, क्योंकि पेपर टफ और इजी हो सकता है. सारा क्वेश्चन नंबर 3 फॉर द प्रीवियस क्वेश्चन का क्वेश्चन 3. आर यू टॉकिंग अबाउट दिस वन? कंट्रीब्यूट टू मेंटल इलनेस एक्सेप्ट. यश बार बार रिपीट मत करो पढ़ना, भले स्पीड थोड़ी सी कम कर लो, एंड डेवलप योर रीडिंग स्पीड, दैट विल हेल्प यू अ लॉट. देवनीश, व्हाई नॉट डी फॉर द फिफ्थ वन? सारा आपने बताया नहीं मुझे कौन सा, यही थर्ड क्वेश्चन आपका था कि नहीं था? मैं देवनीश का लेके फिर आपके पास आता हूँ. यहाँ पे डी आपसे बोल रहा है फिफ्थ के अंदर माइग्रेशन, कल्चरल डिस्पैरिटी, मेंटल डिसऑर्डर्स, सोशल सपोर्ट नेटवर्क्स एंड देन साइकोलॉजिकल. इसमें कल्चरल बेरीफमेंट जो एक इंपॉर्टेंट आपका यहाँ पे है पार्ट, वो तो मिस कर दिया उसने, इसलिए डी विल बी रॉन्ग बेटा. वेलकम अली. कुमकुम बेटा अभी तो बताया, काउंटर आर्ग्यूमेंट बेटा ऑपोजिट, समथिंग दैट विल वीकन द आर्ग्यूमेंट. सारा दैट वन ठीक है. थर्ड वाला अपन फिर से देख लेते हैं. थर्ड यहाँ पे बोल रहा है अकॉर्डिंग टू द पैसेज ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट टू मेंटल इलनेस अमंग माइग्रेंट्स एक्सेप्ट. कौन सा मेंटल इलनेस में कंट्रीब्यूट नहीं करता है? ये तीनों चीजें तो हमारे पास करती हैं, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है. मेंटल इलनेस का ए बी सी किसी ऑप्शन में सारा कंफ्यूजन हो तो लेट मी नो. लेकिन डी क्या बोल रहा है? माइग्रेशन, माइग्रेटिंग फ्रॉम ईगोसेंट्रिक और इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटीज. यहां पे ऐसे उसमें से भी आया है, तो नॉट नेसेसरीली दैट द पर्सन विल बी सफरिंग, क्योंकि अगर वो खुद भी यहाँ पे ईगोसेंट्रिक हो और गया भी ऐसे ही सोसाइटी में जो कि ईगोसेंट्रिक है, तो फिर तो उसको यहाँ पे मेंटल इलनेस होगी ही नहीं. तो इसलिए डी विल बी द करेक्ट आंसर सारा. कुमकुम यस यू शुड. ये लास्ट 2 मंथ से आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन. सबसे ज्यादा मेहनत वैसे भी टिपिकली शुरू साल में स्टूडेंट्स इतनी मेहनत नहीं करते हैं. आपको दूसरों से थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी इफ यू वांट टू गेट सिलेक्टेड. और अभी भी ऐसा नहीं है कि दोज हु विल बी सिलेक्टेड सो दे विल नॉट बी वर्किंग इन दीज लास्ट 2 मंथ्स. एवरीबडी विल बी वर्किंग हियर. दोज हु वर्क मोर ड्यूरिंग दिस लास्ट फेज, उनके चांस बढ़ जाते हैं सिलेक्शन के. वेलकम सारा. वेलकम इंद्रजीत. चलिए, एनीथिंग एल्स? दोज हु डू नॉट हैव अ डाउट दे कैन साइन आउट. So it was good to be with you. We'll be meeting you again. Yes, Anu. जब जागो तब सवेरा. Absolutely right. चलिए, तो फिर मिलते हैं फिर से. Perhaps after, I think next week probably, or next week somewhere, we will be again meeting with some more passages. Till then, take care. Goodbye.